In this session, we'll discuss about cancer and drugs abuse. So let us first discuss cancer. Just a minute. Okay. So as you know, children, cancer is one of the most dreadful disease that affects the human. And it is one of the leading causes of death worldwide in the present era. And more than 1 million Indians suffer from cancer and many die every year. And the research says that after 10 years, in each family, at least 1% will be found as a cancer patient. And that study of cancer development, treatment, and prevention is an important area of biological and medical research. So that's why this topic is incorporated in your syllabus. So let us start our discussion. Cancer. What is cancer? Cancer is a disease characterized by uncontrolled and abnormal division. Very important, children. Abnormal division of body cells. Okay. So generally what happens? All the cells of our body undergo mitotic division except the germ cells. So we'll talk about the body cell, means somatic cell. Okay. So the somatic cell, suppose say this is the parent cell whose ploidy is 2n, and usually it divides to form the daughter cell which are also having 2n number of chromosome. Okay. And this is why this is important, this division is important. The cell division regulates the cell growth and differentiation. And as a result, it also helps in growth and growth of the body, also growth and repair of the body. So the continuous dividing cells, I will tell you how the cell, why the cell divide continuously. Because every cell has a ability to divide up to a limit beyond which it cannot divide. But in this case, a cell, particular cell, divides continuously to form an abnormal mass of tissue, and that is called tumor. So the continuously dividing cells form an abnormal mass of tissue called tumor. So what is tumor? The abnormal mass of tissue that is grown due to continuous division of the cell is known as abnormal, that is tumor. Let us see what are the differences between the normal cell growth and cancer cell growth. Okay. So normal cell growth and cancer cell growth. Okay. So let us see what are the differences. Okay. In a normal cell division is controlled. Okay. But here it is uncontrolled. Okay. How that I'll say you.
then here growth stops after contact with neighboring cell. And this property is known as contact inhibition. Very, very important, children. This property is called contact inhibition. This point is very important. Okay. So, growth stops when the growth of the cell will stop, automatically that cell will stop dividing, and this property is called contact inhibition. Now, but here the contact inhibition is lost. So let me tell you. Suppose say this is a cell. So let me do bigger one. Suppose say this is a cell. So this cell divides first into 2, then 4, and like this it undergoes division. Okay. In case of normal cell, suppose say these are all normal cells. Then what will happen? See, this particular cell, the shaded cell, has been surrounded by the cells from all sides. इसका कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है कि किसी भी तरफ से इसका फ्री नहीं है. So from all the sides it is surrounded by the cells. Now this particular cell will stop growth and division. So this is called contact inhibition. When a particular cell comes in contact with other cells from all sides, then its growth stops and division also stops. So this is the feature of the normal cell. Okay. But in cancerous cell what happens? Suppose this is the cell, and same drawing I am doing here. Okay. Suppose the division takes place like this. Okay. And see, here this cell has been surrounded by other cells from all other sides. But what will happen? This will not respond to the contact inhibition property. Even after getting surrounded by the other cells from all sides, it will not stop dividing. Then what will happen? It will form a abnormal growth. ये एक abnormal growth करेगा. It will form a lump. Okay, and that forms the tumor, and then tumor leads to cancer. Okay, so this is what called contact inhibition property. I think it is clear to you. Now come to next. Normal cell growth. ये जो सेल ग्रोथ यहाँ हुआ, ठीक है, जो सेल डिवीजन हुआ या सेल का ग्रोथ हुआ, सो इट विल रिमेन हियर ओनली. Okay, but here in this case what will happen? This cell will divide and the daughter cell will spread to different parts. It will spread to different parts. Okay, so what is the next difference? Cells remain localized. Okay, but here cells invade surrounding tissue. Okay, next, here because it is normal division, normal differentiation, normal growth, so hence the cell performs normal function. सो मान लो लीवर का सेल है, तो लीवर का सेल जो काम करता है वही काम करेगा. ओके, बट हियर व्हाट हैपेंस? ये काम को भूल जाता है. इट फॉरगेट्स अबाउट द काम. ओके, व्हाट इज इट्स ड्यूटी, व्हाट इज इट्स वर्क, इट फॉरगेट्स, एंड द सेल divide
continuously without regulation. बस ये डिवाइड करता ही जाता है. ठीक है. सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी क्या है समझ में आ गया. ओके. अभी हम देखेंगे ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का एडवांटेज क्या है. सो लेट मी टेल यू व्हाट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. अच्छे से लिख देती हूँ. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. सो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, it is the property of normal cells in which they stop dividing when they come into contact with neighboring cells. तो इसका एडवांटेज क्या है. व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. ये इम्पोर्टेंट क्यों है. व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. इट प्रिवेंट्स unnecessary cell multiplication, maintains normal tissue structure, and control organ size. नहीं तो क्या होता, आपका टिश्यू भी बढ़ता जाता और ऑर्गन भी साइज बड़ा हो जाता. जनरली ये होता है जब ट्यूमर या कैंसर होता है. बट ये कैंसर सेल में व्हाट हैपेंस इन कैंसर सेल. इन कैंसर सेल what happens, it loses contact inhibition. So I'm not writing this. I have already written this one, so I'm not repeating. Okay. Controls organ size. Okay. Now come to the tumor. हम अभी देखेंगे ट्यूमर क्या होता है. What is tumor? Tumor is an abnormal mass of rapidly dividing cells. Okay, and these tumors are of two types. So tumor is of two types. One is benign and other one is malignant. Now let us see what are benign and what are malignant tumor. Okay, so the benign tumor are non-cancerous. It is non-cancerous. ये कभी कैंसर नहीं करता. ठीक है. And it is localized at the site of origin. मान लो जिस जगह पर हुआ, मान लो लीवर में एक जगह पर हुआ तो वहीं पर ही वो रुकेगा और कहीं स्प्रेड नहीं करेगा. एंड दे ग्रो slowly. Very important children, these points are. And do not invade neighboring tissue. neighboring tissue के अंदर नहीं जाता. And do not spread to distant organ. Okay, and
cause comparatively little damage. Okay, so it is not that much harmful. Now come to the um, malignant tumor. So they are cancerous. Okay, and they grow rapidly and invade the surrounding healthy tissue. हेल्थी टिश्यू जो उसके आसपास होते हैं वहाँ वो स्प्रेड कर जाता है एंड दैट्स वाई इट डैमेज द नियर बाय ऑर्गन्स. इट डैमेजेस नियर बाय ऑर्गन्स. आसपास जो ऑर्गन होता है उसको ये डैमेज कर देता है. ठीक है. नाउ why the growth is so rapid? Because it competes with normal cell for nutrient. जिसके वजह से क्या होता है, नॉर्मल सेल को न्यूट्रिएंट नहीं मिलता. सो नॉर्मल सेल बिकम्स वीक and their division becomes slow, but these cells, the abnormal cell growth is very rapid. Okay, and they spread to distant part of the body. Okay, अच्छा, अभी ये जो बिनाइन ट्यूमर है इसका कुछ एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल योर लिपोमा, फाइब्रोमा, आडेनोमा. तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. नाउ कम टू द ट्यूमर सेल. ट्यूमर सेल को हम क्या बोलते हैं? They are also called neoplastic cell. Very important. Okay, neoplastic cell, and they divide continuously and destroy surrounding टिश्यू. ठीक है, अभी हम जाएंगे. ये तो ट्यूमर आपका जो है वो दैट इज लोकलाइज्ड बिनाइन ट्यूमर. बट जो मैलिग्नेंट है वो मेटास्टेसिस दिखाता है, मतलब इन्वाड करता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन को. नाउ लेट अस सी व्हाट इज मेटास्टेसिस. ये रेड में दिखाया क्योंकि दिस इज वेरी ड्रेडफुल. ओके, सो व्हाट इज मेटास्टेसिस? इट इज द spread of cancer cells from the primary tumor to distant organs through, कैसे जाएगा वो? through blood or lymph. ब्लड और लिम्फ. ठीक है, तो ये होता कैसे है आपका प्राइमरी ट्यूमर. नाउ द कैंसर सेल, जो कैंसर सेल इसमें होता है जो कैंसरियस हो जाता है, जो कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाए. ऐसा नहीं कि ट्यूमर में सारे सेल कैंसरियस होते हैं, उसमें से एक आध सेल कैंसरियस हो जाते हैं. एंड द जो सेल कैंसरियस हो जाता है, द कैंसर सेल डिटैच, वो प्राइमरी ट्यूमर से अलग हो जाएगा
and enters the blood or lymph and then travel to distant organ, दूर दूर की ऑर्गन तक चला जाता है, एंड देयर दे फॉर्म द सेकेंडरी ट्यूमर. ठीक है, तो मान लो यहाँ पर मान लो यहाँ किडनी में एक ट्यूमर हुआ था, तो यहाँ जो ट्यूमर है वो सारे सेल कैंसरियस नहीं होते, इसमें से कुछ सेल कैंसरियस हो जाते हैं जो कि यहाँ से सेपरेट होके मान लो लीवर में चले गए और लीवर में जाकर फिर ट्यूमर बना दिया. तो यहाँ जो ट्यूमर बना था ये है प्राइमरी ट्यूमर, और लीवर में जो बनाया दैट इज सेकेंडरी ट्यूमर. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. ओके, एंड ये जो मेटास्टासिस है, this metastasis, it is the most dangerous property of a malignant tumor. ये सिर्फ malignant tumor में दिखाई देता है, and it is responsible for the spread of cancer throughout the body. Okay, now come to the causes of cancer. कैंसर होता क्यों है? What are the causes? First of all, all of our body are having a particular cell that is known, a particular gene that is known as proto-oncogene. Okay, and this proto-oncogene, when converted into oncogene, then the cancer occurs. ओके, तो यहाँ मैं कुछ पॉइंट आपको दे रही हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इनिशियली देयर इज नो कैंसर सेल, इट इज नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ. ओके, so that's why it is considered as a lifestyle disease, but sometimes it also takes place due to infection. Okay, so the transformation of a normal cell into a cancer cell is called oncogenic transformation. Very, very important. Transformation. Okay, called oncogenic transformation. And the agents causing cancer are called carcinogens. Okay, this is also very important. Now come to what are the different types of carcinogens. So the carcinogens are of three types. The first one is physical carcinogen. The second one is chemical carcinogen. And the third one is biological carcinogen. Okay, now the first one is physical carcinogen. So ये जो physical carcinogen होता है, it damages the DNA damage of DNA by radiation. Okay, तो so radiation क्या क्या हो सकता है? For example, the radiations are X-ray,
गामा रे, यूवी रे. तो repeated exposure of a particular body part to these rays cause the normal cell to transform into cancerous cell. Okay, so what happens in this case when it like the DNA gets the radiation? Then what happens? DNA gets mutated and leads to uncontrolled cell division. ओके, नाउ कम टू द केमिकल कार्सिनोजन. अभी केमिकल में हम देखेंगे द केमिकल कार्सिनोजन. द एग्जाम्पल्स आर, दीज आर केमिकल्स. द नेम वेरी नेम सेल्फ इंडिकेट्स दैट दीज आर द केमिकल्स. सो इसमें आपका क्या क्या आता है? टोबैको स्मोक, सिगरेट केमिकल्स, निकोटीन, हाँ, industrial pollutants, and certain pesticides. ओके, तो ये सब आपका क्या करते हैं? ये जो है दैट ऑल्सो कॉज द सेम थिंग. दे ऑल्सो कॉज द सेम थिंग. ओके, डीएनए को म्यूटेशन कर देते हैं एंड दैट लीड्स टू अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द. ओके, लेकिन इसमें से मेजर कॉज कौन सा है? द मेजर कॉज इज द tobacco, very important, smoke are a major cause of lung cancer. So how? See, the smoke contains carbon monoxide. Okay, so carbon monoxide goes to lungs of एक्टिव स्मोकर जो सिगरेट पी रहा है, एंड अदर वन इज योर लंग्स ऑफ पैसिव स्मोकर. बट आउट ऑफ देम who is more vulnerable? So this lungs of the person हु इज पैसिव स्मोकर. पैसिव स्मोकर मतलब क्या है? जो स्मोक कर रहा है उसके आसपास जो है वो खुद स्मोक नहीं कर रहा है, लेकिन जो स्मोक छोड़ रहा है उसको वो इनहेल कर रहा है. तो इट इज दे आर मोर वल्नरेबल. ठीक है, इनमें लंग कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है. नाउ कम टू द लास्ट वन, दैट इज द ऑन्कोजेनिक वायरसेस. सो दिस इज कॉज्ड ड्यू टू oncogenic viruses. Okay, so these viruses are having viral oncogene, and the viral oncogene transfers the transforms the normal cell into cancer cell. Okay, now how it only if एक oncogene will enter into our body, will that cause the cancer? Or in our body itself the oncogene gene can also be produced? Let us discuss that one. Now, proto-oncogenes, the cellular oncogenes. Proto-oncogenes, the cellular oncogenes.
ओके। अच्छा, हमारे नॉर्मल बॉडी सेल में, नॉर्मल बॉडी सेल हैज प्रोटो ऑन्कोजिन, ओके, और यू कैन से CONC, जो कि इनएक्टिव, जो कि इनएक्टिव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, प्रोटो ऑन्कोजिन हर किसी की बॉडी में होता है, ओके। अंडर सर्टन कंडीशन और एक्सपोजर टू हियर फिजिकल कार्सिनोजन और केमिकल कार्सिनोजन और योर बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, इसमें से कोई भी एक अगर बॉडी में आता है, देन द प्रोटोऑन्कोजिन is transformed into oncogene, which is now activated, and this activated proto-oncogene now converts normal cells into cancerous cells. So this is how the cancer occurs in our body. Now come to detection of cancer. Cancer detection and diagnosis. The detection is very important at the early stage. If it could be detected, then it can be cured. Successful treatment can be done. But in later stage, if it is detected, then it is very difficult to treat. Okay, so how to detect करने के लिए हमको सबसे पहला है biopsy. Okay, so in biopsy what is done? Removal of, this is removal of a small piece of suspected tissue for examination. तो मान लो कोई टिश्यू हमको डाउट हो रहा है कि ये कैंसरियस हो सकता है, तो हम उसको क्या करेंगे, वहीं से थोड़ा सा टिश्यू लेकर हम उसको टेस्ट करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है, टिश्यू इज रिमूव्ड, टिश्यू को रिमूव किया जाता है, देन उसका थीन सेक्शंस आर प्रिपेयर्ड। आपने लैब में देखा होगा, जो आपका ओवरी टेस्टिस का जो TS है, कितना पतला काटा गया है उसको, ऐसे ही ये टिश्यू को स्लाइस बनाया जाता है, ओके। एंड देन द सेक्शंस आर स्टेन्ड and examined under microscope. Okay, so this is the first method. Then the next method is histopathological examination. Second, histopathological examination. ओके, इसमें क्या किया जाता है, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टेन्ड टिश्यू। आपने थोड़ा सा टिश्यू लिया, उसको स्टेन किया, ठीक है, और उसको हम अभी देखेंगे, इसमें स्लाइस बनाने की जरूरत नहीं है। सो इट डिटेक्ट्स
एबनॉर्मल कैंसर सेल। ठीक है, अगर एबनॉर्मल कैंसर सेल होगा तो ये पता कर लेता है एंड कंफर्म्स द कैंसर डायग्नोसिस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Now come to, there is another test which is the blood test. ठीक है, ब्लड टेस्ट जनरली ये किस केस में किया जाता है? डन इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, दैट इज ब्लड कैंसर. ठीक है, तो इसमें साइंस क्या है इसका? कैसे आपको डाउट होगा तभी ना आप ब्लड टेस्ट करोगे. तो इसमें क्या होता है? इंक्रीज्ड व्हाइट ब्लड सेल्स, देन बोन मैरो abnormalities. Okay, next come to another test is bone marrow testing. So this is also applicable in case of leukemia. Okay, leukemia and blood cancer. Next, fifth one is radiography. मेनली बाय एक्सरे. ठीक है, एंड इसमें क्या होता है? पता चलता है ट्यूमर इनसाइड बॉडी एंड कॉमनली यूज्ड फॉर lung and bone cancer. Then the next test is CT scan, computed tomography. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मल्टीपल एक्सरे आर यूज्ड to produce three-dimensional, very important, three-dimensional image of internal organ. Okay, so it detects internal tumor accurately, पूरा सही सही बता देगा. Okay, and also identifies the tumor size and location, कहाँ है और उसका साइज क्या है ये बता देता है. Then the seventh one is MRI, magnetic resonance imaging. Okay, so here what is the principle of working? Principle here, strong magnetic field is created and non-ionizing radio waves are used. ओके, तो इसमें आपका एडवांटेज क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस?
detailed image, both pathological and physiological changes detected. Okay, it is useful for brain, spinal cord, muscles, and soft tissues. Okay, now another one is your antibody based detection. So what is this antibody based detection? So here antibodies against cancer specific antigens are used to detect cancer. Okay, now next come to 9 number, that is molecular diagnosis. So here what are detected? The it detects cancer causing genes, देन मदर से फीटस के पास आया क्या वो भी देखना है उनको उसको, दैट इज इनहेरिटेड susceptibility. Okay, and it also causes proto-oncogene mutation. And why these are important to know this, how they are diagnosed? Because after getting this idea, they can avoid the exposure to carcinogens, undergo regular screening also, and reduce cancer risk. Now come to the treatment of cancer. Treatment of cancer. So treatment depends on type of cancer. मान लो ब्लड कैंसर हुआ और हम लेंगे उसका बायोप्सी, ठीक है, तो उसको हमको क्या टेस्ट करना है, ब्लड या फिर बोन मेरो टेस्ट करना है. सो कैंसर के हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे. देन कौन सा स्टेज में है, स्टेज ऑफ डिजीज. ओके, एंड देन पेशेंट्स कंडीशन. ओके, पेशेंट अभी तैयार है कि नहीं, उसका मान लो बहुत ही वीक हो चुका है, देन वी शुड नॉट गो फॉर एनी ट्रीटमेंट. उसको पहले हेल्दी बनाना है उसके बाद. तो अभी ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, फर्स्ट वन इज सर्जरी. ओके, सर्जरी, it is the removal of tumor from the body. Okay, and what is its advantage? This is advantageous in
most effective अच्छा they are most effective in localized cancer. मतलब जिस जगह हुआ उसी जगह पर ही रहेगा, स्प्रेड होने नहीं देगा. तो ये इसका एडवांटेज क्या है आपका? इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फर्दर स्प्रेड, आगे बढ़ने से ये रोकता है. देन कम टू रेडियोथेरेपी. We have already discussed what is radiotherapy. Okay. The next chemotherapy also I have told. And in chemotherapy, the side effect includes hair loss, anemia. So for this purpose, you don't take any medicine. Gradually, that will be okay. Okay. Next, immunotherapy. अच्छा, इम्यूनोथेरेपी क्यों चाहिए? कैंसर सेल्स एस्केप डिस्ट्रक्शन बाय द इम्यून सिस्टम. हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा कैंसर सेल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैंसर सेल बच जाता है. ठीक है. तो इस केस में क्या किया जाता है आपका? बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफाई. ओके. ये जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं? दूसरे जो सेल है, लाइक योर आपका, जैसे हम ले लें इंटरफेरन. ओके. सो इंटरफेरन आपका क्या करेगा? इट एक्टिवेट्स द इम्यून सेल, इट एनहांसेस द इम्यून रेस्पॉन्स, हेल्प्स डिस्ट्रॉय द ट्यूमर सेल्स. ओके. सो इन दिस वे the biological response modifier works. So biological modifier example, that is alpha interferon. Okay. So how it works? It activates the immune cell, then enhance the immune response. Immune response जो पहले दिखाता था, अभी उससे कहीं गुना ज़्यादा immune response दिखाएगा. ठीक है. And it helps that is destroying the tumor cell. Okay. The next is your combination therapy. You know children, cancer cannot be treated at one time. ठीक है. For this it requires years together, which includes your surgery, जिसमें पहले सर्जरी होगा, उसके बाद रेडियोथेरेपी, and then after that chemotherapy. Okay. So ये एक एक अलग अलग कर सकते हैं या फिर एक साथ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द like health condition. Okay. Now I think this chapter is over with this. It is already 50 minutes, so I am not discussing the drugs abuse. I will discuss the drugs abuse in my next session. Okay. Thank you so much. Bye bye.